Hey guys, what's up? So today I thought that I will do a very different type of a video. I will try to take you through my day-to-day working. How do I structure my day? What is it that I do? Don't worry, this will not be about कि यार आज मैंने मटर पनीर बनाया या मेरे बेटा आज स्कूल गए and all that stuff. That nonsense I'll never shoot. Basically, the idea would be to make it an education-oriented vlog. Tell you a little bit about my day-to-day happenings. What is it that I'm doing? How do I structure my day? Because a lot of informal learning happens in my day. So hopefully there will be some techniques that will come up that can potentially help you out. This also goes in line with a lot of people who request me कि अपने day के बारे में बता दो, कुछ daily vlogging वगैरह कर लो. Daily vlogging I'll never do, but whenever I'm doing like something interesting, I feel like whenever I'm having like a light day, I will try to shoot some content around it. So hopefully you guys like it, and that is the spirit with which I will be shooting this video. I'll keep it relevant, to the point, short. So okay, so right now it's like approximately 2:45 p.m. मैंने सुबह का कुछ नहीं शूट किया. I am currently in Thailand. In fact, next week I'm going to India. I have an event in Goa, so I'll have to complete that event. So I look forward to doing that event, and after that I'll be off to Dubai. These days I am running my hedge fund, so I get to meet a lot of people. Therefore, I'm traveling quite a lot. Currently in Thailand, I am studying the real estate market. So I end up getting a lot of learning about different asset classes. How do investors across different parts of the world think about investing? Why is it that old condos or old apartments in Thailand do not get sold much? So there are like small learnings which I keep on getting. So hopefully I'll be able to communicate that during these type of interactions with you. And on that note, basically, I'll not show you like my morning routine and all that. Basically, my goal of the day is very simple, that whenever I get up, I want to do something for my mind, which means that I want to create something, right? And I want to absorb something very nice which makes me think, right? And I want to do something for my body, in the sense that मैं सुबह के कुछ exercise कर लेता हूँ, basic 15-20 minutes. So that is what I typically do. I'm very fond of eating, so I eat like very high caloric food. So I try to compensate for that, all that stuff. बट हाँ, ये 3-4 पिलर्स में मेरा डे बना होता है, राइट? दैट आई ट्राई टू समवॉट ईट हेल्दी. वो हो नहीं पाता मेरे से बहुत ज़्यादा. आई डू समथिंग फॉर माई बॉडी, राइट? सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. आई टेंड टू लर्न समथिंग न्यू एवरी अदर डे. सो बेसिकली मैं उठा सुबह 9-9:30 बजे, 9-9:30. दैट इज़ द टिपिकल टाइम आई गेट अप. आई डोंट हैव एन ऑफिस टू गो टू, fortunately or unfortunately. So therefore it becomes very important for me to keep myself motivated. I do not punish myself much कि यार सुबह उठ के स्क्रोलिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए. सुबह उठ के मैं मस्त स्क्रोलिंग करता हूँ, कोई बात नहीं, राइट? I mean, if I have to scroll, I will scroll. But my intent is to absorb something nice early in the morning. So I do follow like a lot of people, right, on that bit. On LinkedIn, on Twitter. These are platforms through which I consume some kind of information which makes me think. So if I find something nice, if I'm scrolling, I will stop, right? I will reflect a little bit. So basically there are 2-3 pieces that I was able to absorb today. So I have noted them down for you. So the first was a LinkedIn post from Devina Mehra ji. She's a renowned stock analyst and she runs a company, right? And she helps people invest. And the post was about that from 94 to 2003. Sensex gave 0% returns, and from 2003 to 2007, it gave almost 4x or 400% returns. And therefore, equities are volatile. Do I agree with this? 100% yes. Okay. But whenever I'm reading this type of information, it's very important for me to think on spectrums, right? That, okay, fine, this is 100% correct, no doubt about that. But see, the world has changed quite a lot, right? And yes, it's important to go back in history, look at what has happened, run the prognosis that it might happen again, all that stuff. But see, I mean, I don't see this happening again, right? I mean, I'll try to at least have a rational debate with me कि अच्छा ये piece of information पढ़ी है and now why this might not happen, right? So I'll try to investigate that. Many a times you guys ask me that, hey Akshat, what do you read? Which 5 books to read? Which 10 tweets to read? I cannot comment on that, okay? What I'm getting at is that my goal is to think deeply on things. That is what I am pushing my brain to do. And hopefully through these type of vlogs, right? I mean, I would be able to illustrate the point. So anyways, coming back to this particular post, factually this is 100% correct. But hey, if the indication is कि going forward something similar might happen, कि what अगले 4 साल तक कुछ return नहीं आएगा and all that stuff, I don't know, right? I mean, whether that will happen or not, I don't think so. The reason again is very simple, that the world fundamentally changed after the dot-com crash. And if you go read about the history, so this is what I will typically do, that once I read this, I will try to investigate the reason for
for such performance. I'll try to investigate the answer the entire day कि अच्छा ऐसा हो सकता है आगे चल के भी, why not. So basically I'll not bore you with all the details because I have to feature a lot of things today. So what I would pretty much get out of this is very simple, that hey, you know what, okay fine, the stock market world somewhat stagnated for those 4 years. But see, the 2000 dot-com crash and the recovery post that was, one could argue, the start of quantitative easing, right? And that is when easy monetary policy was being explored, and that fundamentally changed the world of investing finance. Post 2008 crisis, the world was left with no other option but to print more money, right? That is what the governments did, and their solution to any problem in the world seems to be that print more and more money. So I'm not worried about risk as of now. Of course volatility will be there, but what I'm worried about is not taking enough risk, right? So that is the lesson that I draw, and therefore I keep on educating my community also regarding the same, and pushing them to learn more about macroeconomics, understand all these salient features, salient points, because that is going to create a massive impact on you, right? So okay, anyways, not boring you much. The second post that I read today which caught my attention was this, and this has to do with how much money is coming into different type of themes in mutual funds, etc. So आप देख सकते हो कि thematic funds are seeing a net sales of 70,000 crores. Then you have small cap followed by mid cap, large cap. Now this is very, very interesting. Why? Because this is absolute current data. What does this indicate? This indicates that as general audience, SIP कौन लोग करते हैं? Generally हम जैसे लोग करते हैं, right? And the general trend right now seems to be that, you know what, we want to make like very good returns. So therefore there has been a massive flow of people into the equity space. पहले हमारे Papa, Mummy, Dada, Dadi, used to stay away from equities. Now people started exploring equities. They started exploring equities very aggressively post 2020, and now people have started to take more and more risk. So what is it that I would think as an investor? Now this is a very important trend for me to understand that, okay, you know what, people are scouting for highest possible return, even at the cost of risk. Now, therefore, I feel that, going forward, a lot of money will move from FDs into equities. Within equities also, people will start exploring small cap, mid cap, all that stuff. So it makes sense for me to educate myself more about small cap, mid cap investing, slightly more riskier investing. Is this a push from my side कि आप भी जाके risk ले लो? No, absolutely not. I'm just telling you how I think about things. Okay. Now, third, finally, what did I explore? So this was a post from my Wisdom Match community. And in case you guys are not following us, do follow us on LinkedIn. It will help a lot. It will help you learn all these tidbits very quickly. So this post talks about the concept of return. हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग वॉरेन बफेट जी की कहानियाँ सुन के सोचते हैं कि कि यार वॉरेन बफेट started investing when he was 12 years old. Now he's like whatever 85 something, right? And so he's made like crazy amount of returns because of the time he has invested in the market. Yes, that is correct. But equally important is the quantum of returns that you make, right? Which is called as alpha. Alpha typically means that if the market is giving you like 12% and if you are generating an above market return, it is called as alpha. So यहाँ पे calculation दिखाई थी मेरी team ने, right? So I mean you can see that the expected return अगर आप 12% से करोगे for a period of 30 years, your portfolio will be 88, right? Versus if you do it at 15%, so 3% alpha पे अगर आप चल रहे हो, then you will make 175. So this is like almost doubling your portfolio, right? हमें लगता है कि 1-2% से थोड़े से कमीशन यहाँ दे देने से क्या फर्क पड़ जाएगा, right? But see guys, I mean it creates like massive impact on your portfolio. So yeah, so these are the type of things that I would think about during my day, and I would try to think about these things very early. So this is like first part of my day, right? I would absorb this type of content. The second part of my day would be that I would write something, create something. I enjoy writing. I have been a professional writer. In fact, I started my career writing. So what did I write today? So today I wrote this Twitter post, right? This was regarding one of the works that I had read earlier, right? Earlier in the week by a professor called as Devesh Kapoor. And he spoke about the fact that India mein growth क्यों नहीं होती, right? For example, if you take a look at US, China versus India, right, then our growth rate is slower. We are growing at what, 7-8%, right, at a low base. Versus if you look at China, then China had depicted double-digit growths. So ऐसा क्या, मतलब China ने ऐसा क्या special कर दिया? Now, of course, this can be a video in itself. Let me know if you guys would want me to make this video. But the key message that I'm trying to give here is very simple. That, see guys, basically like one of the key things if you compare China to India is that the Chinese governance structure is federal in nature in a way, right? कि जो उनकी Communist Party of China है, which is what dictates the incentive rules, structures, both at a federal level, state level, local level.
In India, the way the government functions at a national/federal level, it's very, very different from local level. इसी context में I had written this tweet. Please go and check it out. It presents a certain viewpoint. You might agree, you might not agree with it. The idea was, and this was written in context of the latest announcement made by the Adani Group, that they are going to apply for work visas of some Chinese people whom they want to bring in terms of manufacturing of solar panels वगैरह वगैरह जो EPC contractors होते हैं उसके तहत. So they are going to bring those Chinese people in because they cannot find like talented enough people in India. अब ऐसा हो क्यों है, राइट? आई मीन आप खुद सोच के देखो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू पिक द केस स्टडी ऑफ बिहार. नाउ बिहार इज अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड स्टेट्स एंड इट हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट segmental reservation, so to say, right, at a local level. Now situation ये है कि it's not as if that Bihar does not get funds from the federal government. They do get funds from the federal government, but the local government होती है वो खर्च ही नहीं कर पाते, right? For example, आपने देखा होगा कि even at like railways में भर्तियाँ निकलती हैं, right? I mean the job postings, those are like vacant on so it just does not add up, right? Now why does that happen? It happens because the goal of the federal government is very different. कि वो FDI लाना चाहते हैं, they make like national level policies. उनमें से बहुत सारा execution depends on at the local level, right? So please go and read that post. I will not belabor that point more. The idea of this first half was to help you understand how I think about my day. I create something, so this is something that I created very quickly. I also wrote a post on Wisdom Hatch community, which is my YouTube member community, जिसमें today the stock market is doing really well. I will open it up and check it with all of you. So today when I had opened it up in the morning, it was doing fabulously well. मैं दिन में 2-3 बार check करता हूँ, maybe like my portfolio, which stocks had moved. Yesterday I had made a video which got released. It was regarding 5 or 6 trending stocks, and उसमें से 2 आज stocks में they started giving very good run up. I do not know, right? I mean, it's not as if that I know that these things are going to happen or not. What I do is that I tend to, these days, right, when looking at the market circumstance, it is my deep focus कि मैं ऐसी चीज़ें ना खरीदूँ which is very expensive, right? And this is what I guide my students also कि यार देखो different types of markets exist करेंगे and उसमें you will make different types of mistakes. So it's absolutely critical कि अभी का market देखते हुए you don't buy like expensive stuff. इसी context में I had released the video yesterday 5 trending stocks के नाम पे. You guys can watch it and see the performance of those stocks today. आपको थोड़ा सा खुद कॉन्फिडेंस आएगा. If you are a serious investor, again my push always is कि आप थोड़ा सा fundamentally चीज़ें सीखो. My community can really help you out on that respect. Definitely go and check it out. चलो अब ये boring बातें हो गई and now I am little bit hungry. So I am going to go and have lunch and then I am going to come back and show you the rest of my day. अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ. राइट नाउ आई एम इन थाईलैंड एंड यहाँ पे कॉन्डोज होते हैं. तो कॉन्डोज का मतलब होता है अपार्टमेंट्स, राइट? एंड बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे ना, सो ऑलमोस्ट लाइक 30% 40% कॉन्डोज आर टिपिकली एम्प्टी. वो होते ही नहीं वहाँ पे. वाई इज़ दैट द केस? बिकॉज जो थाईलैंड की पॉपुलेशन है दैट हैज स्टार्टेड टू डिक्लाइन. दिस इज़ वेरी अनलाइक इंडिया. सो दिस इज़ द पॉइंट दैट यू विल अंडरस्टैंड मोर वंस यू गो आउटसाइड इंडिया एंड विजिट अ फ्यू कंट्रीज़ कि हर एक कंट्री का इकोनॉमिक outlook is very, very different. The type of economic challenges that they are facing is very, very different. So I was reading like today's local newspaper, right? And recently the Thai government, what they have done is that they have come up with more relaxed travel visa norms, and उसकी वजह से यहाँ पे there has been like a sudden boom of tourists which have come in this month. So which is very interesting, and आप देखना भी, मैं आपको लेके चलता हूँ right on my way out from my condo, and आप देखोगे कि आपको hardly कोई दिखेगा. एकदम खाली कॉरिडोर है, यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे कोई नहीं. एक दो लोगों की क्लास में आवाज़ आ रही है, दैट्स इट, राइट? मैं आपको फटाफट ले चलता हूँ एंड यू कैन सी इट फॉर योर सेल्फ. आपको हार्डली कोई दिखेगा. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है. एंड यहाँ पे ना फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं. आपको फैसिलिटीज़ भी दिखाऊंगा थोड़े टाइम में, एंड आप देख सकते हो बिल्कुल मतलब कोई दिखेगा ही नहीं आपको. इट्स लाइक अ गोस्ट टाउन. Okay, so I am outside my building and मैं एक residential area में रुकता हूँ typically whenever I am traveling. I tend to stay in Airbnbs because the Wi-Fi काफ़ी अच्छा मिलता है Airbnbs पे. If you stay in hotels, then hotels में typically Wi-Fi इतना अच्छा नहीं मिलता. And यहाँ पे आप देखोगे again, like I mean, if you just take a look around, these are like fairly big buildings. मुझे vlogging आती नहीं है, so I'm just trying my level best to show you all the angles etc. आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा like sort of residential area है, but hardly आपको लोग दिखेंगे, right?
सो आई मीन अगर आप मेन टूरिस्ट हॉटस्पॉट पे नहीं हो तो आपको कम ही लोग दिखते हैं राइट इंडिया के बाहर. सो दैट इज़ हाउ इट इज़ एंड देयरफॉर दीज इकोनॉमीज आर ऑल्सो फेसिंग क्वाइट अ बिट ऑफ challenges. Now, one economy related point that I want to sort of highlight is that, for example, आप ये देख सकते हो कि this is like a condo sale that is happening and यहाँ पे मैं आपको पीछे दिखाता हूँ. I don't know if you can see it behind me. So there is a sales office of one of the condos that are coming up. Another condo is coming up right there. ये काफ़ी नामी गिरामी टाइप के कॉन्डोज़ हैं एंड ऑल दैट स्टफ. एंड यहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है राइट. फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, सो दिस इज़ गेटिंग सोल्ड फॉर 1.39 मिलियन बात इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन. आई कैन नॉट रीड थाई बट दिस इज़ 1.39 मिलियन बात. लेकिन अगर आप एक डिसेंट सा एक अपार्टमेंट यहाँ पे पिक करोगे एंड अगर आप लोग चाहो तो मैं आपको अपना छोटा सा अपार्टमेंट टूर भी दे सकता हूँ. सो मैं उसका भी देख रहा था. तो देयर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड एज DD प्रॉपर्टीज़. वहाँ पे जाके आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है. इनफैक्ट अराउंड 60-70 लाख्स में ठीक ठाक सा एवरेज सा कॉन्डो आ जाता है विच इज़ लिवेबल राइट. एंड इट प्रोवाइड्स लाइक एक्सेलेंट फैसिलिटीज़. तो मैं आपको अपना कॉन्डो भी दिखाऊंगा. मैं एक छोटा सा टूर डाल देता हूँ यहाँ पे, आप लोग देख लेना राइट. एंड उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के कॉन्डोज होते हैं यहाँ पे. इनफैक्ट आई हैव जस्ट रिसेंटली लॉन्च अ रियल एस्टेट कोर्स ऑल्सो वेयर आई हैव कवर्ड बैंकॉक रियल एस्टेट. यही बनाने के लिए मैं एक बार फिर से आया था बैंकॉक एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ थाईलैंड एंड मैंने वो शूट भी किया है. आई एम गोइंग टू दुबई टू शूट द सेम. सो वो भी मैं ऐड कर दूंगा. लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस कि देखो आप जैसे पीछे देख रहे हो तो यहाँ पे ना बहुत सारी कंट्रीज आर ट्राइंग टू पुश देयर रियल एस्टेट बिकॉज दुबई हैज़ बीन एबल टू सक्सेसफुली प्रूव द यूटिलिटी ऑफ पुशिंग रियल एस्टेट एज एन एसेट क्लास. लो टैक्सेशन, कैपिटल गेंस नहीं है, ऑपरेटिंग टैक्स नहीं है उनका रियल एस्टेट पे. सो दे आर एबल टू पुश द रियल एस्टेट रियली रियली वेल एंड लॉट ऑफ फॉरेन मनी कम्स इन टू बिकॉज ऑफ दैट. इंडिया में बिकॉज हमारे टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं सो फॉरेन मनी हार्डली कम्स इन टू रियल एस्टेट. इट कम्स इन टू प्राइवेट इक्विटी एंड देन इट गोज इन टू रियल एस्टेट समटाइम्स बट टिपिकली डायरेक्टली रियल एस्टेट में नहीं आता. तो मे बी दैट्स एन एरिया दैट आर गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू लुक एट क्योंकि इंडिया में काफ़ी अच्छा स्कोप है. लेकिन अगर हाँ यार आई मीन करप्शन बहुत होता है, वो ओपेक बहुत रहता है इंडिया में रियल एस्टेट. सो दैट इज़ ऑफकोर्स अ चैलेंज. अनलेस दैट गेट्स सॉल्व there is no chance that Indian real estate is going to do well. So okay, चलिए मैं आपको लंच पे ले चलता हूँ एंड फिर बात करेंगे. So the place where I'm going for lunch is very close to my place where I'm staying and usually मैं दिन में एक बार बाहर खाता हूँ. मैं दिन में 2 बार खाना खाता हूँ राइट. एंड मेरा सुबह का टाइम 2-2:30 बजे तक तो मैं सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पे ज़िंदा रहता हूँ राइट. एंड मैं कुछ खास खाता होता नहीं हूँ. दिस इज कॉल्ड इज इंटरमिटेंट फास्टिंग. इट हैज़ advantages, that is what health experts say. Now I don't know much about like health and all that, so मैं उस पर ज़्यादा आपको नहीं बात करता. लेकिन टिपिकली मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाऊँ 12-1 बजे तक, so जिससे मेरा काम अच्छे से हो जाता है. एंड देन आई एम मोस्टली फ्री फॉर द रेस्ट ऑफ द डे राइट. सो दिस इज़ अ रेस्टोरेंट वेयर आई एम गोइंग टू हैव. मैं आपको अंदर ले चलता हूँ. सो दिस इज़ अ नाइस रेस्टोरेंट एंड ये एरिया ऐसा नहीं है कि यार ये पिटा ऐसा एरिया है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इस रेस्टोरेंट का नाम है पोला. आई डोंट नो व्हाट दिस मीन्स. सो या आई एम गोइंग टू हैव लंच हियर. मैं आपको एक बार एरिया दिखा देता हूँ थोड़ा सा राइट. सो आप यहाँ से देख सकते हो कि स्टारबक्स भी है सामने. नॉट श्योर इफ यू आर एबल टू सी इट. मैं अपनी उंगली पॉइंट आउट कर देता हूँ तो वहाँ पे. नाउ लेट मी टेल यू वन मोर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन. एंड यही छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं व्हेन यू एक्चुअली एक्सपीरियंस डिफरेंट कल्चर्स. सो ये एक अच्छा हाई एंड सा रेस्टोरेंट है और एटलीस्ट डिसेंट एंड तो है ही राइट. यहाँ पे राइट एस्पिन कॉन्डो वालों ने बनाया होगा इसलिए इसका नाम एस्पिन कॉन्डो है यहाँ पे. एंड वो पोया करके जो भी था ओके. एंड इसके बाहर उन्होंने लिटरली सड़क पे एक स्टॉल लगा रखा है जैसे यूजुअली नॉर्मल स्टॉल्स लगते हैं. इनफैक्ट अगर मैं आपको सड़क के उस साइड ले चलूँ तो यू विल सी दैट देयर आर अ फ्यू स्टॉल्स देयर राइट. आप देख सकते हो वो ब्लू कलर वाले राइट. सो दोज आर लाइक टिपिकल स्टॉल्स राइट. एंड यहाँ पे एक हाई एंड रेस्टोरेंट वाले ने भी स्टॉल लगा रखा है जस्ट टू सेल मोर गुड्स राइट. आई एम नॉट गोइंग टू शूट इट विद हिम. एंड इनफैक्ट मैंने जब लंच खत्म करके आया था तब मुझे पता चला एंड ही वाज द सेम गाय वाज टेकिंग माय ऑर्डर राइट. सो विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. दिखता है कि यार यहाँ पे अभी दो टूरिज़म इज स्लाइटली पिकिंग अप बट द थाई इकोनॉमी इज़ अ लॉट डिपेंडेंट ऑन टूरिज़म राइट. सो विच इज़ both a good thing and a bad thing in a way. Okay, so my lunch is done and I'm now here to buy some water and things like that. And पास ही में है. एंड यहाँ पे थाईलैंड में 7-Eleven इज़ एक्सेप्शनली गुड. इनफैक्ट सब पूरे साउथ ईस्ट एशिया में 7-Eleven इज़ अ चेन जहाँ पे काफ़ी अच्छा सामान मिलता है. इनफैक्ट 7-Eleven इज़ वन एंड देयर इज़ अनदर वन कॉल्ड एज टॉप्स. सो ये दोनों काफ़ी अच्छी चेन्स होती हैं. आई प्रेफर 7-Eleven. यहाँ पे खाना भी वगैरह भी काफ़ी अच्छा मिलता है राइट. सो आई एम गोइंग टू गो एंड चेक इट आउट. मैं आपको कुछ रेट्स भी दिखाता हूँ. देन वी विल स्पीक अ लिटिल बिट अबाउट दी एक्सपेंसेस दैट आर एसोसिएटेड. क्योंकि हमें लगता है कि यार इंडिया बहुत सस्ता है. आई डोंट नो एक ज़माने में होता था बट नाउ आई वुड फील कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जैसे दी एक्सपेंसेस आर नॉट दैट हाई
अगर आप कंपेयर करो इंडियन मेट्रोज से, सो विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। मैं आपको थोड़े से रेट्स भी दिखाता हूँ। दिस इज़ थाई बात, सो इफ़ यू जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 2.3 तो आपको आंसर मिल जाएगा कि INR में कितना है, राइट। तो जैसे ये कितना पड़ेगा, ये 1.125 के आसपास पड़ेगा, राइट, ये तेल की बॉटल। एंड यहाँ पे जैसे इंडिया में पाम ऑयल बहुत चलता है, यहाँ पे कम चलता है पाम ऑयल। इनफैक्ट पाम ऑयल इज़ द मोस्ट अनहेल्दी टाइप ऑफ ऑयल, दैट इज़ वॉट हेल्थ एक्सपर्ट्स ऑल्सो टेल अस। यहाँ पे रामेन काफ़ी अच्छे होते हैं, मैंने खाए हुए हैं काफ़ी। इवन इंस्टेंट नूडल्स आर वेरी नाइस। 7-Eleven के खुद के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। इट्स रियली अमेजिंग कि किस तरीके के दो चेन्स डोमिनेट करती हैं यहाँ पे, एंड उनके खुद के प्रोडक्ट क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। इनफैक्ट थाईलैंड का 7-Eleven सबसे अच्छा बोला जाता है इन साउथ ईस्ट एशिया। सही नहीं है, मैं आपको ज़्यादा पकाता नहीं हूँ, मैं आपको फटाफट रेट दिखा देता हूँ एंड देन वी विल मूव ऑन। चिप्स का पैकेट एंड ये सब आपका स्ट्रॉबेरी मिल्क वगैरह हो गया। ये 36 बात का है। ये आपके यहाँ पे एक और बहुत इंटरेस्टिंग रूल होता है कि जैसे ये जो आपकी मदिरा पान होता है, अल्कोहल, नाउ दैट इज़ स्टॉप्ड बिटवीन 2 PM to 5 PM। नाउ व्हाई इज़ दैट द केस, आई एम नॉट श्योर, बट दैट इज़ हाउ इट इज़। आप देख सकते हो ये, इफ़ यू लुक एट काजू एंड वॉट नॉट, सो दीज आर द रेट्स दैट यू विल हैव टू पे। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि कितने का क्या पड़ता है। आप ये देख सकते हो लेज़ स्टैक्स, ये कितने का, ये 35 का है, तो मतलब करीब करीब 80-85 रुपीज़ के आसपास हो गया इतना बड़ा लेज़ का पैक। सो वही मैंने बोला कि ऑनेस्टली लाइक आई मीन इफ़ यू आर लिविंग इन दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, इन सब सिटीज़ के यहाँ, सो इट्स नॉट एज इफ कि थाईलैंड या मैनी अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ मे बी एक्सेप्ट फॉर लाइक सिंगापुर, आई डोंट थिंक महंगाई इतनी ज़्यादा है, एटलीस्ट ऑन एवरी डे कॉस्ट ऑफ लिविंग बेसिस। ओके, एक फ़ाइनल चीज़, यार आइसक्रीम यहाँ पे बहुत अच्छी होती है, एंड अगर इफ़ यू गाइज एवर कम हियर देन डेफिनेटली ट्राई समथिंग कॉल्ड एज चोको लव। यहाँ पे मुझे दिख नहीं रही है, ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, दैट चोको लव आइसक्रीम इज़ रियली नाइस। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट्स। सो आई whenever I'm at 7-Eleven in Thailand, I definitely have that. It's an exceptionally good ice cream. It's very similar to Cornetto, right? And yeah, it is. So this is what my apartment looks like. And देख सकते हो सामने there is a swimming pool, and these are what condos typically look like in Thailand, right? And this must be like a 35 square meters, right? So for 1 to 2 people, this is like a pretty okay space. ये लोग इंटीरियर्स बहुत अच्छा करते हैं, so this is a lesson for me because I am also running a few Airbnbs and उसके मेरे को इंटीरियर्स कराने हैं, so I would try to emulate it as per Thai condos में जैसे होते हैं। So ये काफ़ी simplistic एंड ईजी टू एग्जीक्यूट टाइप ऑफ इंटीरियर्स होते हैं। एक बार मैं आपको टूर दे देता हूँ। तो दिस इज़ लाइक अ बेसिक लिविंग रूम, राइट। यहाँ पे ऐसा कुछ खास नहीं है, सामने टीवी रहा, ये रही आपकी डाइनिंग टेबल, ये रहा आपका बेडरूम, राइट। एंड काफ़ी अच्छा लाइट वेट वाला बेडरूम है, राइट। सो दिस इज नाइस। एंड देन यू हैव लाइक द बेसिक टॉयलेट हियर, एंड दिस इज़ द किचन यहाँ पे छोटे ही होते हैं, राइट। द रीज़न इज़ दैट इसमें कोई थाई लोग खास खाना बनाते नहीं है, लाइट कुकिंग होती है। कई सारे लोकल हाउसेज में आई हैव अ फ्यू थाई फ्रेंड्स, सो उनके 2 किचन्स होते हैं, one for light cooking something like this and one for heavy cooking which is usually outside their house या connected होता है घर से। So this is again a very nice sort of a thing which they execute, but point being और the key takeaway for me being that अगर interiors कराने तो इस तरीके के simple interiors कराओ जो टूटे टाटे ना ज़्यादा, right। कुछ खास नहीं है, जैसे इसमें कुछ डैमेज होने का खास नहीं है। टेबल इज़ लाइक वेरी बेसिक, इनफैक्ट यहाँ पे एक इन्हें बेंच ही लगा रखी है जस्ट फॉर sort of sitting and all। सो अगर आपको एयरबीएनबी चलाना है तो डूइंग लाइक लाइट इंटीरियर्स, नॉट स्पेंडिंग क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी, कीपिंग द कॉस्ट लो, कीपिंग द मेंटेनेंस लो, ऑल दीज आर क्रिटिकल एस्पेक्ट्स। तो ये तो हो गया हाउस टूर। अब चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। ओके गाइज, सो अनफॉर्चुनेटली आई रन आउट ऑफ टाइम एंड आई हैड अ स्लाइटली बिजी डे। माई डे बिकेम वेरी बिजी आफ्टर लंच। सो आई वाज स्पीकिंग विद अ फ्यू इन्वेस्टर्स, दोज कॉल्स kept on dragging. Then I had to speak with my CA, then I had to speak with a couple of real estate lawyers. So in that process I ended up spending like close to 3 hours, and now it is roughly 6:30 p.m. ish. I do have some workout to be done, in the sense that I would go to the gym, I will take a swim. As I said that I mean these days I am trying to focus a little bit on fitness. It's very important to stay like physically fit. I have been eating a lot of junk crap, so to say, so which is not very nice. So yeah, so I mean I would spend the rest of my time in terms of just doing some physical activity, go for a walk, all that stuff. Typically just to sort of condense the entire vlog so that you get some more learning out of it.
what I would say is that basically, like, my day is very haphazard, so to say. It's not as if that every day I can plan that, okay, this is the amount of time that I would work. I would typically try to work maybe like 3 hours, 4 hours a day, spend roughly an hour working out, all that stuff. This is what I try to do. I read, I reflect. That takes up a lot of time. Very hard to put that in timeline basis. A good exercise that I've started to do is that I pretty much make a mental note on 3 important things that I want to accomplish in a day. So for today, it was that, hey, I want to get all my social media posts done. That was very important. Number two, I had an idea that, okay, I would do a vlog today, so which is what I try to do, very genuinely speaking. And third key thing was that I had not been working out for the last 2-3 days. So I thought that, okay, today I'm going to spend some more time, whatever I can, in terms of doing some workouts. So these were my top 3 priorities, and hopefully I'll be able to get it done today. Most likely 99.99% I'll be able to get it done. So that makes me happy. I see very little value in terms of having like a very big laundry list. यार आज तो मुझे 50 चीजें करनी and all that stuff. No. Second key point that I would like to establish is that I've really started focusing a lot on the quality of thinking. I think that is something that we hardly pay emphasis on, and that impacts us quite a bit, right? So yeah, so I mean, I think these are like 2 central points that I would want to establish. I don't know whether this vlog was useful or not. I'm a very shy person. It's very weird for me to get out on roads and, you know, with camera like this and all that stuff. But if you guys want, I'll continue to make these type of vlogs. Let me know your thoughts. What additional things I can do. I want to make these vlogs informative, and hopefully you learned something new. Thank you so much for watching, and I'll see you soon.